Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with 400 MCQs of romantic period. Dear friends, I have completed from question number 1 to 261 in up to part 11. This is part 12. डियर फ्रेंड these क्वेश्चंस आर वेरी यूजफुल. यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल लगें, उपयोगी लगें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें. सो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन 262. नेम द ओरिएंटल टेल रिटन बाय थॉमस मोर. नेम द ओरिएंटल टेल रिटन बाय थॉमस मोर. ऑप्शन ए अलिफ लैला, ऑप्शन बी लल्ला रूख, ऑप्शन सी लेज ऑफ एंशिएंट रोम एंड ऑप्शन डी होहेन लिंडन. So option B Lalla Rookh is the correct answer. Now question number 263. Iris Melodies is a lyric by. Iris Melodies is a lyric by option A Lord Byron, option B Walter Scott, option C Robert Southey and option D Thomas Moore. So Thomas Moore, option D is the correct answer. Question number 264. Leigh Hunt had a close relation with. Leigh Hunt had a close relation with. Leigh Hunt का close relation किससे था? ऑप्शन ए सैली एंड कीट्स, ऑप्शन बी सैली एंड बायरन, ऑप्शन सी कीट्स एंड बायरन, ऑप्शन डी बायरन एंड कॉलरेज. सो ऑप्शन ए सैली एंड कीट्स, यानी कि ले हंट हैड ए क्लोज रिलेशन विथ सैली एंड कीट्स. क्वेश्चन नंबर 265. Keats followed the free form of verse in his slipshod work. Keats followed the free form in verse in his slipshod work. Option A Lamia, option B Porphyro, option C Endymion and option D Hyperion. Hyperion. So which one is the correct answer? Option C Endymion is the correct answer. Now question number 266. Which writer is known for butterfly quality of his genius? Which writer is known for butterfly quality? कौन अपनी बटरफ्लाई क्वालिटी के लिए जाना जाता था? ऑप्शन ए थॉमस कैम्बेल, ऑप्शन बी ले हंट, ऑप्शन सी थॉमस मोर एंड ऑप्शन डी विलियम बॉबेल्स. So which one is the correct answer? Leigh Hunt, option B is the correct answer. Now question number 267. Who wrote the famous poem Story of Rimini? Story of Rimini is written by option A Leigh Hunt, option B Thomas Moore, option C Lord Byron and option D William Blake. So which is the correct answer? Leigh Hunt, option A is the correct answer. Now question number 268. Leigh Hunt adopted freer form of verse by rejecting. Leigh Hunt adopted freer form of verse by rejecting option A Spenserian stanza, option B terza rima, option C classic couplet and option D blank verse. So option C classic couplet is the correct answer. Classic couplet is the correct answer. Now question number 269. Which work of Leigh Hunt was called a pious, ingenious, altogether worthy and human book by Carlyle? किस वर्क को ले हंट के किस वर्क को इस प्रकार से कहा गया? ऑप्शन ए स्टोरी ऑफ रेमिनी, ऑप्शन बी ऑटोबायोग्राफी, ऑप्शन सी रिफ्लेक्टर एंड ऑप्शन डी none of the above. So option B autobiography is the correct answer. Now question number 270. Lamb, Moore and Campbell कंट्रीब्यूटेड इन द. लैम्ब, मूर और कैम्बेल ने किसके लिए कंट्रीब्यूट किया था? ऑप्शन ए क्रिटिकल रिव्यू, ऑप्शन बी मंथली रिव्यू, ऑप्शन सी टाइम्स एंड ऑप्शन डी क्रॉनिकल. सो ऑप्शन डी क्रॉनिकल इज द करेक्ट आंसर. Now question number 271. Who laid the real foundation of the women's novel? Who laid the real foundation of women's novel? Option A Jane Austen,
पोर्टर, ऑप्शन बी मारिया एजवर्थ, ऑप्शन सी फैनी बर्नी एंड ऑप्शन डी जेन ऑस्टन। सो ऑप्शन सी फैनी बर्नी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 272। एवेलिना इज ए फेमस नॉवेल ऑफ। एवेलिना इज ए फेमस नॉवेल ऑफ ऑप्शन ए जेन ऑस्टन, ऑप्शन बी फैनी बर्नी, ऑप्शन सी जेन आयरे and option D Jane Porton. So which one is the correct answer? The correct answer is option B Fanny Burney. 273 Cecilia and Letters and Diaries are written by the author of. Cecilia and Letters and Diaries are written by the author of option A Evelina, option B Clarissa, option C Pamela, option D Emma. So option A Evelina is the correct answer. 274 Who is an 18th century author, essayist and painter? One of his paintings is still National Portrait Gallery. Option A Edison, option B Bacon, option C Hazlitt and option D Thackeray. So option C Hazlitt is the correct answer. 275 Which of Charles Lamb friend said? चार्ल्स लेम्ब के किस फ्रेंड ने उनके बारे में कहा था कि लेम्ब वाज द मोस्ट डिलाइटफुल, द मोस्ट प्रोवोकिंग एंड सेंसिबल ऑफ मैन, ही ऑलवेज मेड द बेस्ट पन एंड द बेस्ट रिमार्क इन द कोर्स ऑफ इवनिंग. ऑप्शन ए हैजलेट, ऑप्शन बी कॉलरेज, ऑप्शन सी बायरन एंड ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ. सो ऑप्शन ए हैजलेट इज द करेक्ट आंसर. 270 Who said about Wordsworth? His poetry is the reality, his philosophy is the illusion. किसने कहा था वर्ड्सवर्थ के बारे में कि उनकी जो पोएट्री है वो रियलिटी है और उनकी जो फिलॉसफी है वो इल्यूशन है, माया मोह है? ऑप्शन ए अल्बर्ट टेनिसन, ऑप्शन बी जॉन रस्किन, ऑप्शन सी मैथ्यू अर्नल्ड एंड ऑप्शन डी टी.एस. इलियट. So who said? Option C Matthew Arnold. Matthew Arnold said about Wordsworth these remarks. Question number 277. These questions are very useful. Please like, share and subscribe Pankaj Institute of English. 277 Sally died by. Sally की मृत्यु कैसे हुई थी? ऑप्शन ए ड्रिंकिंग पॉइजन, ऑप्शन बी ड्राउनिंग हिमसेल्फ, ऑप्शन सी हैंगिंग हिमसेल्फ, ऑप्शन डी नन ऑफ द दीज. ड्रिंकिंग जहर पीने से, डूबने से, फांसी लगाने से, किससे? तो ऑप्शन बी ड्राउनिंग हिमसेल्फ इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी यस, ऑप्शन बी ड्राउनिंग हिमसेल्फ इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 278 सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस. Season of mist and mellow fruitfulness. Where has this line been taken from? कहाँ से ये लाइन ली गई है कि season of mist and mellow fruitfulness? ऑप्शन ए to blossom, option B our casuarina tree, option C ode to spring and option D ode to autumn. So option D ode to autumn is the correct answer. Question number 279 Sally's The Defense of Poetry was written response to. Sally's The Defense of Poetry was written response to. Option A The Four Ages of Poetry by Peacock, option B The English Comic Writer by Hazlitt, option C An Apology of Poetry by Sidney and option D none of the above. So option A The Four Ages of Poetry by Peacock is the correct answer. Question number 280 Which classic novel was written by Sir Walter Scott? Which classic novel was written by Sir Walter Scott? Option A The Plague, option B The Trial, option C Ivanhoe, option D The Invisible Man. So option C Ivanhoe is the correct answer. Now question number 281 Who is Wordsworth referring to in Brother, Englishman and Friend? 281 जो क्वेश्चन है Who is Wordsworth referring to in Brother,
Englishman and friend. Option A Coleridge, option B Spencer, option C Shakespeare, and option D Bacon. So option B Spencer is the correct answer. Now question number 282. The novel of Sir Walter Scott dealt with scenes in. The novel of Sir Walter Scott deal with scenes in option A Falkland, option B Switzerland, option D C Ireland, and option D Scotland. So option B Switzerland is the correct answer. The novel of Sir Walter Scott deal with the scene in Switzerland. Question number 283. Which of the following women writer is from romantic movement? Which of the following women writer is from the romantic movement? रोमांटिक मूवमेंट से किन वोमेन राइटर हैं? ऑप्शन ए फैनी बर्नी, ऑप्शन बी मारिया एजवर्थ, ऑप्शन सी सुसान फेरीज, एंड ऑप्शन डी जेन पोर्टर. सो ऑप्शन बी मारिया एजवर्थ इज द correct answer. Now question number 284. Question number 284. Sir Walter Scott, who popularized the genre historical novel, used the past in his novels for the purpose of option A recreating history, option B showing his interest in history, option C exploring as to how the present has come about, and option D none of the above. So which one is the correct answer? The correct answer of 284. The correct answer of 284 is option C exploring. Option C exploring as to how the present has come about. Now question number 285. The character Mike Lambourne in Kenilworth is creation of. The character Mike Lambourne in Kenilworth is creation of. Option A Jane Austen, option B Walter Scott, option C Maria Ainsworth, and option D Tobias Smollett. So which one is the correct answer? The correct answer is Walter Scott. Any option B is the correct answer. 286. Coleridge, this lime tree bore my prison addressed to. Coleridge, this lime tree bore my prison. My prison is addressed to. Option A Charles Lamb, option B William Wordsworth, option C Walter Scott, and option D none of the above. So which one is the correct answer? Option A Charles Lamb. Coleridge, this lime tree bore my prison is addressed to Charles Lamb. This is सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पसंद आए हों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें. कॉलरेज डील विथ द सुपर नेचुरल बिकॉज. कॉलरेज जो थे वो सुपर नेचुरल की से डील करते थे क्योंकि ऑप्शन ए द पीपल बिलीव्ड इन द सुपर नेचुरल, ऑप्शन बी द सुपर नेचुरल एलिमेंट एक्सप्रेस आवर इनवर्ड्स नेचर, option B, option C both A and B, and option D none of the above. So option B is the correct answer. The supernatural element express our inward nature. And dear friend, this is the last question. To conclude, as there are not to be found a worthier man and woman than this found couple, so neither can any be imagined merry happy they preserve. So dear friends, from where these lines have been taken, यदि आपको लगता है कि ये इसका आंसर क्या होगा, कहाँ से ये लाइनें ली गई हैं, तो इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डियर फ्रेंड्स.